Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, in whichever time you are listening to this video. I am CM Manoj Kumar. I hope that you are doing well. I am also doing very well. I guess that you have already seen the first lecture, chapter number 1 of Business and Technology, and I hope that you have already started your preparation. Okay, so if any one of you have not looked into the complete videos, matlab the full videos, these revision videos will help you to quickly memorize or to quickly summarize the concepts of business and technology without wasting your time, right? So the original classes might be for 100 hours or 200 hours, 100 to at least 100 hours. I'm sure not 200, at least 100 hours would be there. So you can save a lot of time through these revision videos by quickly giving half an hour, 40 minutes for each chapter. You can revise everything. Okay. And if there is any conceptual doubts, that also can be clarified in this revision videos. So do not skip this. Try to share to as many students as possible that may be helping them to clear their exams. Okay. Chalo, with this introduction, we will be starting our today's second chapter revision. Okay, we'll try to wrap up it as early as possible by only focusing on the specific concepts, only upon the specific concepts related to our chapter number 2. Chalo, let's start. Right. So with this introduction, let us continue with our chapter number 2. Our chapter number 2 name is the business organization and structure. Okay, so in this chapter we are going to primarily focus on organizational structures. So definitely there is going to be a question, compulsory question. So compulsory question will be asked in the final exam. So ensure that you properly remember these different type of organizational structures with full clarity. चलो हम start करते हैं our chapter number 2. See, I will also put my material in the comment box, not comment box, in the description box. So I'll also put my summary notes. Please do not forget to download this. Why? Because if you go through Kaplan material or if you go to the institute material, it is going to waste a lot of time. Why? Because there the material is around 500, 600 pages. Okay. If you follow my notes, I have reduced all that content to hardly some 170 to 180 pages by covering everything possible, and whichever is not necessary I have little bit trimmed it where I felt it is not that much important from the exam point of view. Okay, so please download my notes and please subscribe and please put your valuable comments in the comment box so that it will be a lot of boosting, what we say, motivation for me. Okay, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डिस्कशन अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2. ठीक है. So, in our chapter number 2, firstly, we are going to focus upon the concept of organizational structure. Organizational structure hota kya hai? See, organizational structure is nothing but the hierarchical structure inside the business organization. Okay? Organization structure is nothing but the hierarchical structure inside the business organization. क्या हुआ? फिर से कुछ गड़बड़ हो गया. एक मिनट रुको. Yeah, so let us continue. First, we are going to discuss what is organization structure. So, organization structure होता क्या है कि जो कंपनी में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से देखो यहाँ पे जब भी मैं कंपनी का रेफरेंस देता हूँ ऐसा नहीं कि वो बस कंपनी है. एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्किकल सिस्टम होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है बेटा. तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम स्ट्रक्चर जो डिस्कस करने वाला है, क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर यूज करने के बाद क्या दूसरा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज देयर स्ट्रक्चर एज पर द रिक्वायरमेंट. उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है. ठीक है बेटा.
तो चलो हम पहला स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं विच इज entrepreneurial स्ट्रक्चर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, entrepreneurial structure or simple form of organization structure. See here, whatever you can see highlighted things, okay, highlighted things or some type of diagrams or everything. So these are, see, this is the notes I take for even the full fledged class. मतलब जो full class होता है ना, मतलब ओरिजिनल मेरा जो वीडियोस होता है, full class होता है. सो उनके लिए मैं ये मटेरियल यूज करता हूँ. रिवीजन के लिए भी मैं सेम मटेरियल यूज करता हूँ बेटा, क्योंकि इससे अगर कम कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के ही जाना पड़ेगा. इसलिए जो मैं, मेरा जो ओरिजिनल वीडियोस होता है, ओरिजिनल लेक्चर्स होता है, वहां पे जो भी मटेरियल मैं यूज करता हूँ, मैं रिवीजन के लिए भी वही यूज करता हूँ. यहाँ पे कुछ पाने के बात नहीं है. ओके, एंड जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ ना, दोस आर द की पॉइंट्स, दोस आर द की पॉइंट्स. Okay, I have underlined. So in my upcoming lectures, upcoming notes, I will ensure that I'm highlighting these points by a different color. Okay, I've already started from this chapter. Okay, yeah, I have started from this chapter. I forgot it. Only for first chapter I have not done it. Okay, from second chapter I have done it. तो चलो हम डिस्कस करते हैं हमारा सिंपल स्ट्रक्चर और ऑन्टरप्रेन्योर स्ट्रक्चर. देखो बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे एक ओनर होता है. ओके, एंड उसके नीचे जो उनका जो नीचे हायरार्किकल सिस्टम होता है ना, वहां पे हमको इंडिविजुअल पर्सन्स बात कर, आई मीन काम करने का दिखेंगे. ओके, प्लीज बिवेयर ऑफ माई हिंदी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट लेक्चर, बिवेयर ऑफ माई हिंदी. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. ओके, तो चलो, सी इन सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देर विल बी वन ओनर और देर विल बी ए मैनेजर ऑफ द एंटायर कंपनी, एंड अंडर हिम डिफरेंट एम्प्लॉयज विल बी वर्किंग इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंट रोल्स. ओके, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक रोल होता है, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आई स्टार्टेड वन स्मॉल किराना शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्मॉल सॉरी ग्रोसरी शॉप. ओके, डू यू थिंक दैट देर विल बी एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर? उतना फॉर्मल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं. वहां पे एक ओनर होता है एंड उनके नीचे 3-4 एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं, जो भी काम ओनर बोलेगा वो करेंगे. ओके, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कुछ होता नहीं है. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और हायर एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, वन ओनर एंड अंडर द ओनर देर विल बी डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग एंड दे विल रिपोर्ट टू द ओनर. ओके, दिस विल बी रिपोर्टिंग टू द ओनर. सो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखो, थोड़ा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का बात अगर करेंगे तो यहाँ पे तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, मोर रेस्पॉन्सिव टू मार्केट होता है, गुड कॉन्ग्रुएंस होता है, सॉरी गोल कॉन्ग्रुएंस होता है. गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब जो ओनर सोचता है ना वही एम्प्लॉय सोचता है. ओके, एम्प्लॉय का सोच, ओनर का सोच यहाँ पे अलग नहीं होता है, सेम होता है. ओके, एंड नेक्स्ट, गुड कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज विल बी देयर एंड close bond to the workforce will be there. Why? Because there will be very few employees, they need to work closely. There is no concept of मतलब, देखो, we can't say there will not be any conflict. There may be conflict, but the conflicts will be very very less. कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, एम्प्लॉय का कोई करियर डेवलपमेंट होगा नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उनका नेक्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की क्या है? ओनर बनना है. क्या ओनर एम्प्लॉयज को ओनर बनने देगा? कभी नहीं देगा. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द मैनेजर और द ओनर एंड देन कैन नॉट कोप अप विद द डाइवर्सिफिकेशन और द ग्रोथ. क्योंकि अगर ग्रोथ करना है तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल काम नहीं आएगा, इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा. ओके, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? This is the concept of simple form of organizational structure or entrepreneurial form of organizational structure. Okay, beta, are we all clear about this? तो चलो, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर. ओके, सी दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, जो सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये उसका एक्सपेंशन है. ठीक है बेटा, तो चलो हम डिस्कस करते हैं. हम्म, क्या हो गया फिर से? Right, beta, that is all about our simple form of organization structure, and then now we will discuss about what? Our functional form of organization structure. Okay, देखो, how to remember all these structures through diagrams. Diagrams देख के you need to try to remember. Okay, see, I will explain you in a very very simple manner. So in functional form of organization structure, there will be the
board of directors, or you can see CEO, और ओनर और मैनेजर एज द केस में भी, मतलब वो पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहता है. एंड अंडर हिम हु विल बी वर्किंग हियर, स्पेशलिस्ट विल बी वर्किंग. ओके, विच स्पेशलिस्ट, फंक्शनल स्पेशलिस्ट विल बी अपॉइंटेड. ओके, क्योंकि अगर बिजनेस ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मार्केटिंग का देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए, फाइनेंस देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए, HR देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए, है ना. एंड उनके अंदर एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं. ओके, सो मतलब क्या होता है कि let us take this marketing department. So here the marketing manager will be appointed, or marketing, what we say, yeah, marketing manager will be appointed. And under marketing manager there will be some employees. Let us say there are three employees: employee 1, employee 2, and employee 3. Now these employees will be reporting to marketing manager would be reporting to board of directors. Understood, beta? Similarly, if you take production manager, let us say production manager is appointed, and under him some three persons are working, one, two, three. Now यहाँ पे reporting structure कैसे होगा कि employees will be reporting to the production manager, and production manager will be reporting to the board of directors. Same thing happens with finance. Okay, so employees who are working under the finance department will be reporting to finance manager report to the owners or the directors. Okay, this structure is called as functional form of organizational structure, right beta? So if you remember this structure, now this diagram, if you remember this diagram, your concept is complete, your concept is clear. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर. देखो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या यही था? नहीं था. सिंपल स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर में ये सब नहीं था. ओके बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता था? ओनर्स, एंड बिलो ओनर्स देर आर एम्प्लॉयज वर्किंग. नो फंक्शनल स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज, जो भी काम करेगा, करने के लिए बोलेगा वो करना ही पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. फंक्शनल स्पेशलिस्ट अपॉइंट होते हैं, उनका जो डोमेन नॉलेज है उसी के ऊपर काम करेंगे, एंड वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे ओनर्स को. ओके, एम्प्लॉयज रिपोर्ट करेंगे फंक्शनल मैनेजर रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ठीक है बेटा, तो वहां पे जो भी डिसएडवांटेजेस था ना सिंपल स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एडवांटेजेस बन जाएगा. ओके, सो ऐसा काम करने से क्या होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्कफ्लोस होगा, एंड स्पेशलिस्ट विल बी मोर कंफर्टेबल टू वर्क इन देयर ओन एरियाज, डोमेन एरियाज, एंड यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बनने का संभावना है. ओके, डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि एम्पायर बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, एंड इट विल बी स्लो डिसीजन मेकिंग, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर्स में अराइज. ओके, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा, है ना. एंड दे नीड टू कोप अप विद द डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस जब एक्सपैंड करेगा ना, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर भी काम नहीं करेगा बेटा. ओके, इफ द योर बिजनेस इज स्मॉल देन फंक्शनल स्ट्रक्चर विल वर्क, बट इफ योर बिजनेस फर्दर एक्सपेंड्स देन दिस ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, next we are going to discuss about divisional form of organizational structure. Okay, divisional form of organizational structure. See, before discussing anything I will explain you with the diagram. ये जो diagram है ना, ये very very important है. और otherwise I will draw the diagram and I will show you कि divisional structure काम कैसे करता है. Okay, so at the top of the company there will be the CEO of the company, or board of directors, or something, or by whatever name you called, or manager ऑफ एंटायर कंपनी, ऐसा टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहता है. एंड अंडर देम देर विल बी डिफरेंट डिविजन्स. डिविजन्स रहेगा यहाँ पे, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4. देखो ये डिविजन्स जो होता है ना, किस बेसिस के ऊपर फॉर्म होता है? योर डिविजन्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट्स, और बेस्ड अपॉन द सर्विसेज, ओके, और बेस्ड अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशन, or based upon customer groups. Okay, this is the basis of dividing your business. This is the basis of dividing your business. ओके, सो ये जो डिविजन्स है ना, ये जो डिविजन्स है, किस बेसिस के ऊपर आप क्लासिफाई करते हो डिविजन्स के? ओके, कस्टमर ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ज्योग्राफिकल लोकेशंस. एनी वन ओनली यू शुड यूज. यू शुड नॉट यूज एवरीथिंग एंड मिक्स योर बिजनेस, है ना. You should use only any one of this in order to classify your entire business into different divisions. Now if I take division number 1, based upon products,
ओके, मेरा डिवीजन वन में एक प्रोडक्ट P1 करके कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इन दिस डिवीजन देर विल बी फंक्शनल एक्टिविटीज। ओके, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस होगा, यहाँ पे HR होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना। सो यहाँ पे मार्केटिंग होगा, यहाँ पे R&D होगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स होगा एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे होता है कि नाउ अंडर फाइनेंस अगेन देयर विल बी एम्प्लॉयज वर्किंग, HR के अंदर अगेन एम्प्लॉयज दे विल बी वर्किंग, ओके, R&D सम एम्प्लॉयज विल बी देयर, है ना बेटा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग देखो कैसे होता है कि एम्प्लॉयज विल रिपोर्ट टू द फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स, ये सब फंक्शनल मैनेजर्स है ना, दे विल रिपोर्ट टू डिविजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर विल रिपोर्ट टू द ओनर्स। Now, this whatever we have discussed, this will be happening in division 2. The same thing will be happening in division 3. Same thing will be happening in division 4. Okay, this is the hierarchical order of reporting. Okay, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे रिपोर्टिंग ऐसा होता है। ओके, डिवीजन 1 में जो भी हुआ डिवीजन 2 में भी होगा, डिवीजन 3 में भी होगा, डिवीजन 4 में भी होगा। लेकिन देखो डिवीजन 2 में अलग प्रोडक्ट के लिए होगा, डिवीजन 3 के लिए अलग प्रोडक्ट के लिए होगा। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट 2, यहाँ पे प्रोडक्ट 3 मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट 4 मैन्युफैक्चर होता है। सो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर भी फाइनेंस मार्केटिंग सब होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा। अंडरस्टूड। तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला है बेटा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? दिस इज हाउ आवर डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क्स। ओके, so I guess already you would have discussed this. Now whatever I said, the same thing is there here. Once you can go through my notes, once you can go through my notes, I will be pinning this notes in my description box. Okay, description box में मैं ये notes रख दूंगा, एक डाउनलोड करके पढ़ लो। ओके, दिस notes is absolutely free, everyone, it is free, it is free. I'm not charging a single rupee for anybody. Just I want that more and more students should come into this ACCA and become professionals. Why? Because I love professionals. Okay. Why? Because being a professional, being a chartered accountant, being a cost accountant, I am very, very proud of my profession. So I also wish that you people should complete your ACCA as early as possible and come to the profession and enjoy your life. Contribute towards this country. है ना, contribute to the corporates. तो चलो, it takes some time, okay, but see, I am expecting something from you, like, subscribe, share, comments. I expect only this from you. Other than this, nothing I expect. Okay, which is absolutely free. This also is free. You need not pay anything for this. Okay, this is also free. ये करने के लिए तुमको 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा। ओके, बट इसके वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो मेरा स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, चलो मैं और एक वीडियो डाल देता हूँ। ओके, मेहनत तो लगता है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, मोटिवेशन चाहिए बस। ये मैं सी दिस आई एम डूइंग विथ माई ओन मोटिवेशन की आई लाइक दिस, है ना। सो इससे कुछ पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी आएगा कि चलो मेरा जो नॉलेज है, कंट्रीब्यूशन नॉलेज है, थोड़ा सा मैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड ACCA कोचिंग, वाई? बिकॉज द ACCA कोचिंग फीस आर वेरी वेरी हाई। Okay, instead of going to coaching institute, even if you watch these videos also, you can make up your ACCA. Okay, so chalo, with this we are going to continue with our next concept, which is advantages and disadvantages. So in divisional structure you have growth. Why? Because number of levels are high, so there is a concept of growth here, and clear responsibilities for the products and the divisions are determined. No confusion. Training of general managers can happen as a part of their career development, and easily they can adopt diversification. देखो diversification का जो point है ना, सिंपल में भी आया था एंड डिविजन फंक्शनल में भी आया था। सो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन अगर बिजनेस करता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिट नहीं होता है, लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, आप जितना भी डाइवर्सिफाई कर लो ये फिट हो जाएगा। दैट इज a specialty of this divisional structure. And next, top managers will be free from day-to-day activities. They can concentrate on strategic issues. Coming to disadvantages, potential loss of control. Why? Because जितना
लेवल्स ऑफ हायरार्की इंक्रीज होगा उतना क्या होगा बेटा बेटा उतना कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, लैक ऑफ गोल कॉन्करेंस, मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज है, फंक्शनल मैनेजर्स है, डिविजनल मैनेजर्स है, उनका गोल अलग हो सकता है, कंपनी का गोल अलग हो सकता है ना। तब कंपनी के लिए बहुत नुकसान होने वाला है। दे शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल्स, दे शुड बी goal congruence. Okay, but there is a possibility that lack of goal congruence may happen in this type of structure, and see many things are being done repetitively. Okay, जैसे कि preparation of reports, functional manager also prepared a report and divisional manager also prepare a report having the same information. Again at the top level another consolidated report is made which is already given to them, है ना। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। स्पेशलिस्ट में फील आइसोलेटेड, and then allocation of control cost can be a problem. Okay, allocation of central cost can be a problem. central cost का मतलब क्या होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में और एक कॉन्सेप्ट होता है, टॉप लेवल के ऊपर देर इज अनदर ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। ओके, अनदर ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस डिविजन्स। क्योंकि कंपनी लेवल में जो डिविजनल इंफॉर्मेशन होता है ना, डिविजनल 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, सो ये डेटा कलेक्ट करने के लिए और एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए होता है। ओके, एंड उनका कॉस्ट कौन बेयर करेगा भाई, किस डिवीजन को एलोकेट करना है, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ना। सो एट द टॉप लेवल somebody should collect the information from all these branches or divisions, है ना। so the salaries which are paid or the cost that is incurred there for setting up the data systems and all, okay, which division you are going to allocate, it becomes a very very problematic. Okay, so this is all about our concept of divisional structure. Okay, so simple divisional structure is very simple। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा, सी यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन मैंने दिया है, प्लीज गो थ्रू दिस इलिस्ट्रेशन। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। geographically structured it is a part of our divisional structure। okay, geographical structure क्या होता है, एज ए पार्ट ऑफ इट इज a part of our divisional structures। सो जो भी हमने वहां पे डिस्कस किया सेम कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने यहाँ पे कहा था कि तुम्हारा जो डिविजन्स है ना, तुम्हारा जो डिविजन्स है यहाँ पे, सो दिस डिविजन्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर बेस्ड अपॉन कस्टमर ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, सो यहाँ पे बस ज्योग्राफिकल लोकेशन ही चेंज होगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हायरार्की तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, सेम एज इट इज। ओके, सो डिविजनल स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर सेम टू सेम, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम एडवांटेजेस, सेम डिसएडवांटेजेस, सेम रिपोर्टिंग सिस्टम, सब सेम रहेगा। ओके, ओनली थिंग इज हियर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग योर बिजनेस बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट यू विल क्लासिफाई बेस्ड अपॉन ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि जोनल हो गया, रीजनल हो गया, एंड स्टेट लेवल हो गया, एंड नेशनल लेवल हो गया। ओके, नेक्स्ट, सो ये फिर से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट डायरेक्टली विल गो टू मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, देखो मार्क मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, देखो यहाँ पे पहले ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम कैसे करता है वो पहले डिस्कस करते हैं। ओके, एंड दैट टू आई विल एक्सप्लेन थ्रू अ डायग्राम, देन डोंट वरी। सो लेट अस से प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, HR etc, एंड प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। देखो, so let us take an example of construction business। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। सी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या होता है कि जैसे देर आर सम एम्प्लॉयज हु विल बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ओके, लाइक द साइट इंजीनियर्स। ओके, they may be used in project 1, they may be used in project 2, they may be used in project 3। और अकाउंटेंट तो प्रोजेक्ट 1 के लिए सेपरेट अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट 2 के लिए सेपरेट अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट 3 के लिए सेपरेट अकाउंटेंट तो होगा नहीं। और जैसे कि जो सेल्स टीम होता है, सेल्स मैनेजर्स होते हैं। ओके, सो डू यू थिंक दैट फॉर प्रोजेक्ट 1 सेपरेट, प्रोजेक्ट 2 सेपरेट, प्रोजेक्ट 3 सेपरेट रहेगा? नो,
तो जब बिजनेस बढ़ेगा ना तब हो सकता है, लेकिन इनिशियली क्या होता है कि एक ही मैनेजर रहेगा. सो इन दैट केस जस्ट इमेजिन दैट अ पर्सन इज वर्किंग इन प्रोजेक्ट नंबर वन. Okay, a person is working in project number one as a marketing manager. Okay, now he may be also asked to work in, the same person may be also asked to work in project number two. Okay, and also in project number three. In that case, if you observe here, in that case, if you observe here, this fellow will be reporting to project one manager, and he will be also reporting to the sales manager of the entire company, which means here there is horizontal as well as vertical flow of communication. There is horizontal as well as vertical flow of communication. So here if you see, the same person again, he need to report to project number two manager, he need to also report about project two to the sales manager. Okay, same thing happens here, which means there will be a cross communication among different departments and different projects. Now, the same concept also is applicable for IT companies. In IT companies also, there are some persons who work in number of projects. Okay, so that is where the confusion comes here. देखो, क्योंकि देखो जो पहले स्ट्रक्चर हमारा था, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है बहुत क्लियर है. एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा डिविजनल मैनेजर, सॉरी, functional manager को, and all functional managers will report to divisional manager will report to CEO. So there is no conflict between one division and another division. Okay, first division and second division में कोई conflict ही नहीं है. लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि project 1 and project 2 may have the same managers who will be reporting to multiple persons को report करना पड़ेगा. क्रॉस प्रोजेक्ट और क्रॉस डिविजनल कम्युनिकेशन यहाँ पे होने वाला है, and that is the reason why this matrix structure is regarded as one of the most complex organizational structure. ओके, हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है. आईटी कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ये यूज होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ना वो भी सेम कॉन्सेप्ट है. यू कैन सी हियर प्रोडक्शन मैनेजर ए, प्रोडक्शन मैनेजर बी, प्रोडक्शन मैनेजर सी. ओके, दे मे बी रिपोर्टिंग टू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, चलो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स विल बी एप्लीकेबल हियर. फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन ऐड ए प्रोजेक्ट, यू कैन रिमूव ए प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हारा स्ट्रक्चर से रिमूव कर सकते हो. And customer orientation, here primary focus is done on the customers and encourage the teamwork. And then coming to disadvantages, ड्यूअल कमांड. देखो मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगल लाइन ऑफ कमांड हमेशा रहना चाहिए. अगर ज्यादा पर्सन्स ज्यादा काम बोलेंगे तो पूरा का पूरा काम बिगड़ जाता है, इसलिए सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए. लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर इज ड्यूअल लाइन ऑफ कंट्रोल. डाइल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी इज डन एंड टाइम कंज्यूमिंग. वाई? बिकॉज मीटिंग्स at different levels will be made. जैसे यहाँ पे मैंने कहा, the meeting need to be scheduled with project one manager, project two manager with the same person. Just imagine how much of time will be wasted, है ना. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर. बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर क्या होता है कि in traditional organization structure you have a specific structure which cannot be generally altered. but आजकल का जमाने में जो ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप होता है ना, वहां पे आपको लिमिटलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहना चाहिए. फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए. जो भी हमारा एनवायरमेंट में चेंज होता है उसके हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Okay, so that is called as boundaryless structure. You can see here in contemporary model of organizational design which adopts more flexible approach two structures. Boundaryless organizations are essential and unstructural design that is not constrained by having a chain of command or a formal departments, with the focus instead being on flexibility. Okay, so different types of boundaryless organization structures are hollow structure, virtual structure and modular structure. Okay, so boundaryless organization structure में हमारा three important structures होने वाला है, that is our hollow structure, virtual structure and modular structure. Okay, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ये होता क्या है, हॉलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है. हॉलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सी दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. definitely there is a possibility of some MCQs under this concept. Okay, I am feeling that definitely questions will be asked about this hollow structure, virtual structure and modular structure. Okay, ठीक है. चलो हम डिस्कस करते हैं
हॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, हॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो, हॉलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पूरा बिजनेस का एक्टिविटीज होता है ना, दे विल बी स्प्लिट इनटू टू कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड एज कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। ओके, देखो जो कोर एक्टिविटीज होता है ना बेटा, वो कंपनी खुद अंडरटेकिंग करता है, मतलब खुद का डिपार्टमेंट्स बनाता है, खुद का मैनेजर्स को हायर करता है एंड खुद संभालता है। लेकिन जो नॉन कोर एक्टिविटीज होता है ना, उसको आउटसोर्स कर देता है। ओके, कोर एक्टिविटीज को कंपनी खुद कर लेता है एंड नॉन कोर एक्टिविटीज जो है ना, वो कंपनी आउटसोर्स कर लेता है। एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस? That is only called as hollow structure beta, very very simple. Okay, देखो, for example an accountancy training organization might outsource the less important functions such as payroll to the third party organization। अगर एक अकाउंटेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उनका जो हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज होगा, क्या कंपनी खुद करेगा? वो नॉन कोर एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, लेकिन कोर एक्टिविटी क्या है? जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मैं मेरा वीडियोस बना के मैं यूट्यूब में भेजता, लाइक यूट्यूब में मैं रखता हूँ, सॉरी, भेजता तो नहीं हूँ बेटा, कहाँ पर भी भेजता नहीं हूँ मैं। देखो कोई भी वेबसाइट मेरा ऐसा नहीं कि जहाँ पे मैं वीडियोस भेजता हूँ। ओके, लेकिन बस रिवीजन वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ना, खुद बनाता हूँ, खुद एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। ओके, बाई, जस्ट इमेजिन दैट अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा वीडियोस का डिमांड हो जाएगा, क्या मैं सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ? रिकॉर्डिंग भी मैं करूँ, एडिटिंग भी मैं करूँ, नोट्स भी मैं बनाऊँ, सब कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। देन आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोर एक्टिविटीज क्या है। डिलीवरिंग ऑफ द लेक्चर्स, मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू द स्टूडेंट्स इज माई कोर एक्टिविटी, है ना। एंड देन यूट्यूब मैनेजमेंट और दिस व्हाट वी कैन से दिस नोट्स प्रिपरेशन इज नॉट माई नॉन कोर एक्टिविटी। मतलब नोट्स मैं ही प्रिपेयर करूंगा, बट आई विल नॉट टाइप एवरीथिंग, है ना। कलरिंग, एडिटिंग, आई विल नॉट डू इट, आई विल आउटसोर्स टू समबडी। वाई? बिकॉज इट इज a non-core activity, isn't it? So that is called as a hollow business organization structure। यहाँ पे देखो कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। अंडरस्टूड? सो आई हैव गिवन ए लाइव एग्जांपल, माय ओन एग्जांपल आई हैव गिवन। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अवर virtual organization। See, in virtual organization, what happens is many of our business functions will be outsourced। सर आपने पहले तो वही बताया, है ना। सर यहाँ पर भी तो आप वही बताया। नहीं बेटा, यहाँ पे मैं वही नहीं बताया। यहाँ पे हॉलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज में। ओके, विच मीन्स जितना भी कोर एक्टिविटीज बिजनेस का होगा, सारे बिजनेस अंडरटेक करेगा, मतलब कंपनी खुद अंडरटेक करेगा। लेकिन वर्चुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द बिजनेस विल बी नॉट ऑन रियल, मतलब ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई होता नहीं है। वो क्या करेंगे कि पूरा का पूरा आउटसोर्स कर देंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स? Okay, so here you can see outsourcing will be done of many of its business structure functions to the other organization and simply exist as a network of contracts। इसलिए वर्चुअल स्ट्रक्चर को हम कॉब वेब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो सेंट्रल ऑफिस होगा ना, बहुत छोटा सेंट्रल ऑफिस होगा, एंड जो बिजनेस फंक्शंस होता है ना, आप सारे आउटसोर्स करके, एंड इन सब को हम क्या करते हैं कि थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जोड़ते हैं, है ना। ये तो दिखता है ना, स्पाइडर वेब जैसे दिखता है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेनी इंटरनेट रिटेलर्स कुड बी सीन एज ए वर्चुअल कंपनीज। इंटरनेट रिटेलर्स का मतलब ये होता है कि एयरटेल एक्सट्रीम यूज किया और जियो फाइबर नेट यूज किया। डू यू थिंक दैट दे आर हैविंग बिग स्ट्रक्चर, बड़ा बिल्डिंग है वहां पे वो बिजनेस करते हैं? नहीं, हमको उनका बिजनेस कहीं पर भी नहीं दिखेगा, सारे के सारे काम ऑनलाइन हो जाता है ना। जब तुम लोग ने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर नहीं तो जियो का कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो इंस्टॉल किया था, डू यू थिंक दैट उनका कोई बड़ा बिल्डिंग होगा तुम्हारा एरिया में? कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, वो फिजिकली एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ ऑनलाइन में हो जाता है ना। So here you can see almost 90 to 95% or sometimes 99% is also outsourced। Understood? Now understood the difference between hollow organization and a virtual organization? Understood beta? Or I can give a best example of, let us say, almost all the branded companies.
Let us say Nike shoes. Do you think that the company will prepare the entire shoe? No. They will break your shoe into number of parts and they will identify that in these parts, how many parts that we are capable of manufacturing, maintaining the quality. Okay. Otherwise, if we are not capable of outsource everything and we will get everything assembled in our company and we will test it and then we will sell it. ओके मतलब जहां पे उनका एक्सपर्टाइज है वो एरियाज वो अंडरटेक करेंगे, बाकी एरियाज वो आउटसोर्स कर देंगे। लेकिन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में 90% और 95% के सारे बिजनेस एक्टिविटीज वो आउटसोर्स कर लेते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बेटा। एंड द नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो वेन एवर यू हैव दिस मॉड्यूलर, यू रिमेंबर मॉड्यूलर किचन्स। सुना कभी मॉड्यूलर किचन? मॉड्यूलर किचन कभी सुना? सी मॉड्यूलर किचन का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो चाहिए उस टाइप का सिस्टम का रैक्स होता है मॉड्यूलर किचन में। ओके। एंड हमारा जो वगैरह डब्बा वगैरह रखते हैं ना उसके लिए सेपरेट सेपरेट जो वुड से बना हुआ वुड वर्क होता है। जैसे मॉड्यूलर का मतलब भी वही होता है कि वेर एवर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड दैट विल बी मेड। Okay, if you see the kitchen racks, some racks will be small where you can keep the spoons, some जो और कुछ भी जो रैक्स होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है प्लेट्स के लिए एंड देन बाकी बर्तनों के लिए, है ना। तो मॉड्यूलर का मतलब वही होता है। सी फॉर एग्जांपल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, they may pay external manufacturers to make some of the key components of his handsets, such as processors and screens. जितना भी लैपटॉप कंपनीज है, जितना भी माइक्रो स्मार्टफोन कंपनीज है, ज्यादातर क्या करते हैं उनका जो पार्ट्स होता है वो कंपोनेंट्स बाहर कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे देते हैं, बाकी वो खुद करते हैं। ओके। दे आर असेंबल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर along with the other components it has manufactured itself. Okay, in extreme cases the manufacturing of all the components are outsourced, meaning that the company is simply assembling them and creating the final product. Okay, this is called as modular organization. ठीक है बेटा। so these three come under what? Boundaryless organizational structures. ठीक है। now next another most important concept that we are going to discuss is Mintzberg organizational structure. Mintzberg organizational structure, remember this word, इसको remember करना, हेनरी मिन्सबर्ग को remember करना। you remember this word Mintzberg, हेनरी मिन्सबर्ग। सी हेनरी मिन्सबर्ग क्या बोलता है कि जो एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 एस्पेक्ट्स। ओके, एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 एस्पेक्ट्स। जो बिजनेस में मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना वो 5 ब्लॉक्स में वो डिवाइड करता है ना। जो पहले ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक एपेक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक एपेक्स। सो स्ट्रैटेजिक एपेक्स क्या होता है कि दैट दोज पर्सन्स who will be at the top level of the management and they take the decisions which are applicable to the entire company. And then comes your middle line। मिडिल लाइन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लेवल मैनेजर्स बोलते हैं उनको। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग होता है ना, देन दे टेक दैट ओनली टू देयर बिजनेस स्पेसिफिक। जैसे कि कंपनी को एक्सपेंशन करना है, वो डिसाइड करेगा स्ट्रैटेजिक एपेक्स। एंड अगर एक्सपेंशन करना है तो एक प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंड करना वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ओके। एंड देन कम्स आवर ऑपरेटिंग कोर। ऑपरेटिंग कोर का मतलब यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉयज रहते हैं कि हियर दोज एम्प्लॉयज हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दोज इश्यूज, जैसे कि लेबर, ओके, फंक्शनल मैनेजर्स, दे कम अंडर दिस ऑपरेटिंग कोर। ओके। एंड देन टेक्नोस्ट्रक्चर। टेक्नोस्ट्रक्चर क्या होता है कि दैट पार्ट ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू द एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि आईटी टीम। ओके, जैसे कि आईटी टीम। so they provide this technological support to this business organization, है ना। and the fifth block is supporting staff। the fifth block is the supporting staff। okay, supporting staff is nothing but they directly doesn't participate in the manufacturing। जैसे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेबर जो होते हैं ना वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। सुपरवाइजर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ओके, लाइक
accountants, finance managers, okay, or let us say other HR managers. So they come under supporting staff who try to provide this administrative support. So पूरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बेटा, वो 5 ब्लॉक्स में डिवाइड करता है हमारा हेनरी मिन्सबर्ग. ओके, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक एपेक्स, that is nothing but strategic apex, and then middle line, operating core. See, these are the 3 main levels of management, and techno support and support staff try to help these 3 levels. Okay, you should remember these 5 levels, which are very very important from the exam point of view. So here one illustration has been given. You please go through this illustration. It's only for your understanding purpose. Okay, you need not remember for the exam, लेकिन एग्जाम में आंसर करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन. ओके, डिस्कस करते हैं स्केलर चेन. देखो, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन. बस उतना ही बेटा, उससे ज्यादा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि, जस्ट ए मिनट. So what is called as span of control? Span of control means how many persons a manager can control, give the responsibility. It is called as a span of control. Okay, span of control कहाँ से आता है? स्केलर से, चेन से ही आता है. ओके, जैसे कि मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ. ओके, सो लेट अस से अंडर मी सम 10 employees are working. That is my span of control. 10 employees are my span of control. मार्केटिंग पर्सन होता है, उसके पास लेट अस से 50 employees काम करते हैं, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बन जाता है. ओके, सो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है ना, किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है मैं कौन सा काम करता हूँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क आई एम अंडरटेकिंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज दैट आई एम हैंडलिंग, विच लोकेशन आई एम वर्किंग. है ना, लेट अस आई एम वर्किंग इन हेड ऑफिस, आई मे बी हैंडलिंग मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. है ना, इफ आई एम वर्किंग इन ब्रांच ऑफिस, I may be handling less number of employees. है ना, all these are the factors that will contribute to span of control. Once again, scalar chain क्या होता है? Line of authority, line of control होता है. Span of control क्या होता है? How many persons you are controlling? How many persons you are controlling is called as span of control. Are we clear about the concept of scalar chain and span of control? है ना. See, this you will forget at the time of exam की scalar chain, the word unfamiliar word, ये क्या होता है भूल जाएंगे. Scalar chain, line of authority, span of control, how many persons you can control at a time. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्स टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. देखो, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि यू हैव लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड मोर लेवल्स. ओके, ज्यादा मैनेजमेंट लेवल्स होगा. टॉल का मतलब लंबा है ना. टॉल का मतलब क्या होता है बेटा? लंबा होता है. मतलब यहाँ पे लेवल्स ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज कम होते हैं. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज लेस लेकिन ज्यादा रहेगा. ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टॉल लेवल होता है, ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है. ओके सर, टॉल ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जो मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे कम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है. हमको कैसे पता चलेगा बेटा? वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, मैनेजमेंट स्पेसिफिक है. अंडरस्टूड. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफशोरिंग. बेटा, ऑफशोरिंग का मतलब ये होता है कि शिफ्टिंग योर बिजनेस फंक्शन टू अनदर कंट्री. ऑफशोर का मतलब वही होता है ना. ऑफशोर का मतलब वही होता है ना. ऑफशोरिंग इज नथिंग बट यू आर ट्रांसफरिंग सम ऑफ और शिफ्टिंग सम ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज टू अनदर कंट्री. इट इज कॉल्ड एज ऑफशोरिंग. ओके, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? बस उतना ही, ज्यादा पढ़ने का नहीं है, बस इफ यू अंडरस्टैंड इट इज इनफ. Next, shared service approach, once you go through it, that is not that much important from the exam point of view. Okay. See, since this is a revision lecture, I'm only covering those areas which are very much important from the exam point of view. ठीक है बेटा. Now, I will give a small insight about centralization and decentralization function. Okay. See, centralization, decentralization का मतलब क्या होता है कि decision making कहाँ पे होता है. Okay. So, centralization and decentralization talks about what? Where the decision making is done. Is it done at the centralized level? मतलब only the top level management is doing the decision making. Decentralized मतलब there is a delegation of decision making. Okay. मतलब other levels of management are also given the power to do this decision making. Okay. Now, centralization and decentralization, sorry.
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दे आर हैविंग देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, जैसे कि कमिंग टू एडवांटेजेस, सीनियर मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन strategy. Okay, and then better control, better local decision due to the local expertise. See, this will happen only in case of decentralization. Centralization में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग एक ही आदमी के ऊपर होता है ना बेटा. नेक्स्ट, बेटर मोटिवेशन होता है, क्विकर रेस्पॉन्स होता है. This is all happens in decentralization. It also comes with disadvantages. Loss of control. Senior management का control हो जाएगा. Why? Because everyone start participating. Creates a lot of confusion also. Okay. Dysfunctional decisions, poor decisions, training cost, duplication of roles, extra cost to the obtaining the information. Okay, all these are the different types of disadvantages of having decentralization. ओके, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है. सो इन सेंट्रलाइजेशन यू हैव concentration of the decision making power with only one person or very few persons generally at the top level. In decentralization there is a delegation of authority. Done. Done everyone, done everyone, done. तो चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी. ओके, जो स्ट्रैटेजी कंपनी में बना जाता है ना, वो लेवल्स क्या है. 3 लेवल्स होता है बेटा. स्ट्रैटेजिक लेवल, बिजनेस सॉरी स्ट्रैटेजिक लेवल, बिजनेस लेवल, और इट इज कॉल्ड एज टैक्टिकल लेवल एंड फंक्शनल लेवल. ओके, देखो, so this is called as strategic level, this is called as tactical level, and this is called as operation level, and it is also called as top level, middle level, and lower level. Okay, all of you have understood. Now at top level, tell me who will be there at the top level. Generally CEO of the company, CFO of the company, board of directors, they will be there at the top level. Okay, so whatever the decisions they are making, the strategies they are making, that will be applicable for entire business organization. Entire business organization के लिए वो plans होता है, right बेटा. And then comes tactical level. Tactical level मतलब business level. They are also called, this is called as corporate level decision making या corporate level strategies. यहाँ पे tactical strategies और business level strategies. ओके, सो टेल मी हु आर द पर्संस देयर एट द टैक्टिकल लेवल. मिडिल लेवल पे कैसे मैनेजर्स रहते हैं, डिविजनल मैनेजर्स और एसबीयू मैनेजर्स. ओके, सो एसबीयू के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट रिमेंबर डिविजनल मैनेजर्स. ओके, सो नाउ हियर दे आल्सो मेक द स्ट्रैटेजीज, बट यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज मेक किया जाता है ना, दे आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक. ओके, हियर इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर कंपनी, and here it is product specific or division specific. Okay, and then comes the lower level of management, operational level of management. So who will be there here? All your functional managers and the employees who are working under them. Okay, now here whatever the decisions are taken, that is for the day to day business activities के लिए जो भी decisions किया जाता है ना, that will be made at the lower level of management. You can see here at the top level very few persons are there, and middle level it will increase, and lower level much more increase. Why? Because lower level is the person who is actually participating in the day to day activities. Okay, have you all understood beta? Done, 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 done. And I guess this is the last part of our marketing mix is also there, right? ठीक है. Marketing mix is also there, pricing strategy is also there, then we'll wind up. Okay. Okay, then we'll do one thing. We'll stop here our discussion. We'll stop here our discussion and we will continue the balance in our next video. Okay, why? Because this video has become little bit long. Why? Because second chapter थोड़ा सा बड़ा chapter है. सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. तो एक काम करते हैं, यहां तक जो भी मैंने कहा एक बार रिवाइज करो, एंड देन आई विल कम अप विद अनदर स्मॉल वीडियो फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस टाइम बेटा, हैव ए नाइस टाइम. चलो, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो.